came in, she married her brother. अगर आपको देखना है कि भारत के दुश्मन कैसे दिखते हैं तो इस महिला को एक बार देख लीजिए। यह महिला भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, भारत को गालियां देकर जोर जोर से हंसती है। अफ्रीकी मूल की यह महिला इल्हान उमर है जो दुर्भाग्य से अमेरिका की सांसद। The number of Kashmiri Muslims who have been killed in Kashmir is immense, and they have been victimized by Pakistani terror state. You also make the incredible dubious claim that the Indian government's crackdown in Kashmir is good for human rights. If it was good for human rights, Ms. Singh, it wouldn't be happening in secret. इस महिला ने पीओके का दौरा करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। वो फोटो वायरल हो गई, जिसके बाद पता चला कि ये पीओके में भी गंदगी फैलाने गई थी। ये महिला यहां तक बयान दे चुकी है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। लेकिन को देखना है कि भारत के दुश्मन कैसे दिखते हैं तो इस महिला को एक बार देख लीजिए। ये महिला भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करती है, भारत को गालियां देकर जोर जोर से हंसती है। अफ्रीकी मूल की ये महिला इल्हान उमर है जो दुर्भाग्य से अमेरिका की सांसद भी है। इल्हान उमर की नौकरी भारत और इजराइल को गाली देकर ही बची हुई है, लेकिन भारत विरोधी इस महिला के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ धोकर पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये महिला जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस महिला की असलियत दुनिया को दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर एक बयान देकर भारत का बदला ले लिया है। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देखना चाहिए कि इल्हान उमर भारत के बारे में क्या बोलती है। इल्हान उमर तब चर्चा में आई जब ये चुपचाप पीओके पहुंच गई। पीओके में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती इल्हान उमर को रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस महिला ने पीओके का दौरा करने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक फोटो खिंचवाई थी। वो फोटो वायरल हो गई, जिसके बाद पता चला कि ये पीओके में भी गंदगी फैलाने गई थी। ये महिला यहां तक बयान दे चुकी है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान खतरे में हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इल्हान उमर वो महिला है जिसने दूसरी शादी अपने सगे भाई से कर ली है। इल्हान उमर अफ्रीकी शरणार्थी थी जो चुनाव जीतकर अमेरिका की संसद तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि इल्हान उमर हमारे देश से भी नफरत करती है। ये महिला ऐसी जगह से आई है जहां पे सरकार तक नहीं है और हमें आकर ज्ञान दे रही है कि देश कैसे चलाना है। चलिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का धमाकेदार बयान सुनवा देते हैं। Didn't she marry her brother, right? She came in, she married her brother. This is nice. Think of it. She hates our country. She hates our country. She comes from a place that doesn't even have a government. And then she comes here, she tells us how to run our country. Your colleague Richie Torres has said calling for a ceasefire is a dangerous double standard that the U.S. wouldn't hold itself to. So my question is if this attack happened in America, would you be calling for a ceasefire as well? Vengeance is not a foreign policy doctrine. We are here to save lives. Israelis, Palestinians, Americans. Anyone else? So is that a yes or a no? Anyone else? I do have another question. Why don't you want Israelis to question go from after the anyone terrorists else? that burned, tortured, killed their babies and children and still have them hostage? Why don't you want the Israelis to go after the terrorists that did that? How many more killings is enough for you? Is it 1,000 more? 2,000 more? 3,000? How many more Palestinians would make you happy if they die? Will you be fine if all of the people of Gaza were gone? Would that make you happy? Would that be the thing that makes you proud? And maybe that's the question you should ask Richie. Is he okay? How many more Palestinian lives is he comfortable with? Because I am not comfortable with any more. Any other questions? All right, thank you. Last question would be, what do you say to the Israeli people that feel like you're telling them to do nothing when their children are being held hostage by terrorists?
I'm also saddened by the fact that 535 members of Congress could come together in one breath, fully condemn the horrors of what Israelis experienced. And that there is now only maybe few handful of them who could get to the point of saying, we condemn the slaughter of Palestinian children, of mothers, of fathers, of grandmothers, of grandfathers. Where is your humanity? How do you look at one atrocity and say this is wrong? But you watch as bodies pile up, as neighborhoods are leveled. Israel has dropped more bombs in the last 10 days than we dropped in a whole year in Afghanistan. Where is your humanity? Where is your outrage? Where is your care for people? How is it that we have a president who is talking about releasing hostages, who is talking about getting American citizens out of Israel, but could not get himself to say, I want to save and work to save the hundreds, thousands of Americans is stuck in Gaza? What is wrong with you? How is this possible? I want to say how insane and painful and scary it is to work and serve in a space where we have a member in our caucus say all Muslims are responsible for this, and not a single condemnation comes from our caucus leadership or any member of Congress. How is it that we are serving in a body where there are members who condemn us for asking for peace, for ceasefire? But I am never going to stop saying Palestinians deserve freedom, that we need to free Palestine. And I am never going to stop saying that there is no way that we should allow in sending more bombardments to kill Palestinians. Thank you. But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? Ilhan Omar, Congresswoman, we have noted that she has visited a part of the Indian Union territory of Jammu and Kashmir that is currently illegally occupied by Pakistan. Let me just say that if such a politician wishes to practice her narrow-minded and politics at home, that's her business, that may be her business. But violating our territorial integrity and sovereignty in its pursuit makes this ours, and we think the visit is condemnable. It was an unofficial personal visit. It does not represent any policy change on behalf of the United States government.
For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. The number of Kashmiri Muslims who have been killed in Kashmir is immense, and they have been victimized by Pakistani terror state. You also make the incredible, dubious claim that the Indian government's crackdown in Kashmir is good for human rights. If it was good for human rights, Ms. Singh, it wouldn't be happening in secret. Although I'm myself one of the persecuted Kashmiris who grew up in destitution as a refugee in my own country, I do not represent my community here today. The fundamental point that I'm trying to make is the victims in Kashmir are the ones who have been killed and massacred by Pakistani-sponsored terrorists. The number of Kashmiri Muslims who have been killed in Kashmir is immense, and they have been victimized by Pakistani terror state. But throughout these 30 years of conflict, throughout these 30 years of Islamic jihad and terror in Kashmir perpetrated by Pakistan has been completely ignored and overlooked by the world press. Ms. Singh, as a reporter's job is to find the objective truth about what's happening and report it to the public. You have an enormous audience at the Times of India, and you have an enormous responsibility to get it right. I'm aware of how the narrative shaped by reporting can distort the truth. I'm also very aware of how it could be limited to sharing only the official side of the story. The press at its worst when it is a mouthpiece for a government. In your version of the story, the only problems in Kashmir are caused by what you call militants, the only people protesting to break away from India, and are all nefariously backed by Pakistan. You also make the incredible, dubious claim that the Indian government's crackdown in Kashmir is good for human rights. If it was good for human rights, Ms. Singh, it wouldn't be happening in secret. You make what I might call a feminist case for the occupation of Kashmir and the communication shutdowns, saying it would be better for women. My record, my professional record, is that I have lashed out at every single government in India on various issues, from human rights violations committed in Kashmir to the lynchings over beef in the mainland India. I have a record of being non-partisan throughout in my profession of the last 20 years. So for Ms. Omar to say such accusations against me is really condemnable. एक ग्रुप भी बना दिया है I2U2, जिसमें ऑफ कोर्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी शामिल है। उसके अलावा आप देखोगे भविष्य में इंडिया, यूएस और इजराइल वेरियस इश्यूज पर यूएन में और जगह भी मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। मगर इन तीनों कंट्रीज के रिलेशंस में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ गया था। इलान उमर, जो यूएसए की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने अपना काम ही बना दिया था इंडिया और इजराइल की आलोचना करना। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इलान उमर की फोटो। जब ये सबसे पहले यूएसए में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उस वक्त इन्होंने सिर्फ इजराइल को टारगेट किया, इजराइल के बारे में बहुत कमेंट्स करी, ये कहा कि इजराइल गलत कर रहा है फिलिस्तीन के साथ। फिर इजराइल गाजा वॉर में जब भी इजराइल पे अटैक हुए, इसको इग्नोर कर दिया। जब इजराइल ने वापस गाजा पे रिटेलिएट किया, उस पर काफी कमेंट्स करी। एक टाइम पे आकर इन्होंने ना सिर्फ इजराइल, जो जुदाइज्म रिलीजन है और उस रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं ज्यूज, उन पर भी कमेंट करनी स्टार्ट कर दी। यूएसए में बहुत सारे थिंक टैंक्स इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि लगता है कि इलान उमर को
एक पर्सनल प्रॉब्लम है ज्यूज के साथ। नाउ ये तो इनका इशू था विद इजराइल। इंडिया के बारे में भी इन्होंने बहुत ही नेगेटिव बातें बोली हैं ओवर द ईयर्स। एक बार तो ये यूएसए के लोकसभा में, जो जिस तरीके से हमारे यहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, यूएसए में इनका जो लोकसभा है इसको ये कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक एंटी इंडिया रेजोल्यूशन लेकर आई और उस पर वोटिंग करवाने की डिमांड करी। हालांकि बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतनी सद्बुद्धि थी कि इससे यूएसए का नुकसान होगा, तो इन दी एंड ये रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं। मगर एक आप कह लीजिए कोशिश इनकी पूरी थी। इन्होंने ये भी पूरी कोशिश करी कि जिस तरीके से टर्की और चाइना पर S-400 परचेज करने पे लगे हैं सैंक्शंस, सेम सैंक्शंस भारत पे लगाए जाएं। यहां पर आप देख पाओगे सिर्फ 5 यूएस डेमोक्रेट्स थे जिन्होंने भारत के अगेंस्ट वोट किया काटसा इशू को लेकर। आपको पता होगा यूएसए के पार्लियामेंट में वोटिंग हुई कि क्या भारत को काटसा वेवर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मेजॉरिटी से, आराम से आप कह लीजिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हुआ। मगर जिन 5 कांग्रेसमैन ने ये वोटिंग करी कि नई इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, उनमें से एक थी इलान उमार। और ये यहां पर नहीं रुकी। रिसेंटली हमने फिर ये भी देखा कि ये एज ए यूएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद गई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाना देखो अपने आप में कोई ठीक है, इनकी खुद की मर्जी है। मगर पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने पाकिस्तान की साइड से एंट्री कर ली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसकी वीडियो अपलोड करी, एक ब्रिज दिखाया कि देखो मैं बिल्कुल पीओके में खड़ी हूं, ये ब्रिज पार करके इंडियन साइड स्टार्ट हो जाएगी। ये देखकर भारत सरकार ने पहली बार इनके बारे में स्टेटमेंट दी। ये कहा कि इलान उमार की नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स है। और इवन यूएस गवर्नमेंट को भी इलान उमार की आलोचना करनी पड़ी और खुद को दूर करना पड़ा। ये कहना पड़ा कि देखिए ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में गई है पाकिस्तान, इनकी विजिट का कोई रिलेशन नहीं है विद यूएसए। मगर ये पाकिस्तान में जाने के बाद ना वापस जब यूएस लौटी तब इन्होंने इशू भी क्या रेस किया, इशू ये रेस किया कि इंडिया ना अपनी साइड लगातार डैम्स बिल्ड कर रहा है, उससे कल को नदियों का जो फ्लो है, जो पानी है, ये पाकिस्तान को कम मिलेगा। तो आप कह सकते हैं लिटरली कोई भी इशू हो जो इंडिया और इजराइल को टारगेट करता है, उस इशू को इन्होंने रिगरसली उठाया है। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, यूएसए में भी लोअर हाउस अपर हाउस है, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वहां पर, मगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉरेन पॉलिसी में इतनी बिजी कैसे हो गई? आई मीन इनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो वहां पर ये बिजी नहीं रहती कि स्टूडेंट्स का इशू होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिर और चीजें हैं। ऐसे लगता है कि बस ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है स्पेशल फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि इलान उमार का नाम बार बार फॉरेन पॉलिसी में इस वजह से आता था क्योंकि ये यूएसए की गवर्नमेंट में जो कमेटीज है ना, उनमें से एक जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी पार्ट थी। यूएसए के पार्लियामेंट में आपको बहुत सारी कमेटियां मिलेगी, एजुकेशन लेबर को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, सीनियर सिटीजन्स की अलग से कमेटी होती है। वैसे ही विदेश नीति की भी एक कमेटी है, उस कमेटी की मेंबर थी इलान उमार। तो इस कमेटी के मेंबर होने से ही ना वैसे ही आपको काफ़ी हक मिल जाता है कि आप इंटरनेशनल इश्यूज़ पर कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप काफ़ी बार बाकी कंट्रीज़ को विजिट भी कर सकती हैं और कई बार तो यूएस गवर्नमेंट आपकी विजिट को फाइनेंस भी करेगी। तो इसी वजह से हमने देखा कि चाहे आर्टिकल 370 का इशू हो, दिल्ली राइट्स का इशू हो, बाय गॉड कोई भी इशू हो जहां पे एंटी इंडिया मुद्दा बन सकता है, तो इलान उमार ने उस मुद्दे का पूरा यूज़ किया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है केविन मैकार्थी। और केविन मैकार्थी ने, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, पावर संभालते ही पहली बात पता क्या बोली? पहली बात इन्होंने कही कि मैं इलान उमार को हटाऊंगा। इलान उमार ने इजराइल के बारे में, यूएसए के फ्रेंडली कंट्रीज़ के बारे में, मेरे बारे में जो बोला है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। तो पहला काम मेरा ये होगा कि मैं इलान उमार को ना फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटा दूंगा। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखो। You know, I made another promise to you last time. There was this congresswoman, Ilhan Omar. That's a rightful boo. I remember what she said about me. I remember what she said about Israel. Remember what she said about the relationship. I remember it so much, I promised you last year that as Speaker, she no longer would be on foreign affairs. And I'm keeping that promise now. तो यूएसए के लोकसभा के जो नए स्पीकर हैं ये कह रहे हैं मैंने पिछले साल वादा किया था कि मैं पावर में आऊँगा, आते ही इलान उमार को हटाऊंगा और मैं अपना वादा पूरा करने वाला हूं। इन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये बात बुलवाई है, ओपनली कहा है कि मैं इलान उमार को रिमूव करवाऊंगा
इनकी जो कमेंट्स थी इजराइल के ऊपर मैं कभी भूलूंगा नहीं, ना भूला हूं। और ऑब्वियसली इलान उमर ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि केविन मैकार्थी की वजह से यूएसए में इस्लामाफोबिया, जीनोफोबिया, रेसिज्म वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये इस्लामाफोबिया है, मुझे इस तरीके से टारगेट करना, मुझे कमेटी से रिमूव करना। देखो अभी बिल्कुल इलान उमर को फॉरेन कमेटी से हटाकर इनकी पावर बहुत कम कर दी जाएगी। फिर जो इनकी टिप्पणी है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इतनी कवर भी नहीं करा करेगा, क्योंकि उस कमेंट की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि मेन जो कुर्सी थी इनके पास, जो पावर थी, वो छिन चुकी होगी। और इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इलान उमर ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए अपना मिशन बना लिया था कि आर्टिकल 370 के इशू को ये बार बार रेज करेंगी यूएसए में। और इन्होंने जो बाइडेन की सरकार को ये काफ़ी बार कहा कि आप खुद यूएन में आर्टिकल 370 का इशू उठाइए। तो अब इनका जाना इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अब देखो इससे बैड हेडलाइंस नहीं बनेगी। नहीं तो इससे पहले देखो क्या था कि इंडिया यूएस आपस में जितनी भी तरक्की कर ले, इलान उमर की एक स्टेटमेंट हेडलाइन बन जाती थी। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन कमेटी की मेंबर भी थी। मगर अब पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 99% यूएसए में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये इंडिया को लेकर नेगेटिव विचारधारा नहीं रखते। देखो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि सारे बस हमारी सुनो, बस हमारा डोमिनेशन हो जाए। अगर कई लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, फाइन विद दैट, वी आर फाइन विद दैट। मगर इलान उमर जो कर रही थी वो बहुत ही सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म था। और अब हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत से यूएस पार्लियामेंटेरियंस खुल के कहते हैं कि आई एम प्राउड टू कॉल द पीपल ऑफ इंडिया एज अमेरिकाज फ्रेंड्स। और व्हाइट हाउस ने भी डिक्लेयर किया है कि अगर आपने सोचा था कि 2022 एक बड़ा साल था इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए, जो बिल्कुल था, तरक्की भी हुई है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। और यूएसए ने यहाँ पर कहा है कि 2023 और भी बड़ा होगा इंडिया यूएस रिलेशंस के लिए। इसका Now, Islamist Democrat Ilhan Omar has been removed from the U.S. Foreign Affairs Committee. She has been accused of pandering to Islamist radicals and terrorists globally. She's also known for anti-Semitic hate and anti-India comments on a regular basis. Omar had in 2019 apologized for suggesting that the Republican support of Israel was fueled by donations from a pro-Israeli lobby group. Republicans, who have a narrow House majority, wanted her off the Foreign Affairs Committee over this remark. Omar had visited Pakistan-occupied Kashmir in 2022, wherein she promised to mainstream Pakistan's concerns with India. She had showed no compassion or knowledge about the plight of Kashmiri Pandits. This debate today, it's about who gets to be an American. What opinions do we have to be counted as Americans? This is what this debate is about, Madam Speaker. There is this idea that you are a suspect if you are an immigrant, or if you are from certain parts of the world, or a certain skin tone, or a Muslim. It is no accident that members of the Republican Party accused the first black president, Barack Obama, of being a secret Muslim. So I will continue to speak up because representation matters. I will continue to speak up for little kids who wonder who's speaking up for them. I will continue to speak up for families around the world who are seeking justice, whether they are displaced in refugee camps or they are hiding under their beds somewhere like I was, waiting for the bullets to stop. Because this child is equal to Hamas and the Taliban, from a member of the Foreign Affairs. She said Americans only like Israel because it's all about the Benjamins. And 3 years later she said, I didn't know there's a trope when it comes to referring to someone who's Jewish with money. She said on 9/11, as a member of Congress, as an individual who's sitting on Foreign Affairs, something happened that day. What does that say to other people around the world? What does that say to somebody else who wants to create another 9/11 America? I'm sorry. It's not right. We were right in our action, and she can serve on other committees. But it puts America in jeopardy, and I'm not going to do that under my watch. And it's fair in the process, unlike them.
When you have a member of the Republican caucus who has talked about Jewish space lasers and an entire amount of tropes and also elevated her to some of the highest committee assignments in this body. This is about targeting women of color in the United States of America. Don't tell me, because I didn't get a single apology when my life was threatened. Today's resolution, as it relates to Representative Omar, details 6 statements she made as a sitting member of Congress that under the totality of the circumstances disqualify her from serving on the Committee on Foreign Affairs. It is important to note that this resolution is very narrowly tailored and does not prevent Representative Omar from serving on other committees. Where are the free speech warriors today? The hypocrisy is obvious to the American people. You are showing who you all are, really. The gentlewoman's time has expired. Omar will not be silenced. The gentlewoman's time has expired. Congressman Omar, The gentlewoman's time has expired. To be clear, the representative can say whatever the heck she wants, but we don't have to accept it or embrace it. Individuals who hold such hateful views should rightly be barred from that type of committee. We cannot let the poisonous ideology of anti-Semitism permeate into policy decisions that impact the lives of millions of Jews around the world. India Today spoke to Aarti Tikku, who was shut down by Ilhana when she raised questions regarding the persecution of Kashmiri Hindus in 2019 during the US congressional hearings. Listen in. What is your first thought? Because I remember when you were speaking at that point, there was these constant sarcastic smiles by Ilhan Omar. You were not being allowed to give your views properly, and you literally had to battle your way into giving your perspective too. It was clear that her bias was out in the open. What is your first thought today, Aarti? Well, Pooja, I stand vindicated today. Finally, the truth has prevailed, and I'm really glad that Republicans have shown her the boot from the US Foreign Affairs Committee. Ilhan Omar is fundamentally a bigot, an Islamist and a jihadist who stands by Pakistan's cross-border terrorism, who stands by Al-Qaeda, who justifies and apologizes for all Islamic radical groups. And unfortunately, she had the platform of US Foreign Affairs Committee for 5 years because of Democrats, because Democrats keep appeasing Islamists and jihadists. There is a nexus between the left and Islamists in the US and in fact in most of the democracies in the world. And finally, Republicans have done the course correction. They have shown her the door. They have in fact ensured that she was disgracefully exited